Okay, so I will show you help regarding solution of the assignment. Uh, the assignment for shelter. Okay, that how you should solve the shelter assignment. So step number one is you need map. Okay, you need map of tehsil of Pakistan. Okay, and that map shall, so that it matches its object ID. Its object ID matches your class number. Okay, your class number. Okay, so um in that you have to, the next step will be that you will pick 4 points. Okay, and I told you some distances. I recommended some distance. Do you remember what was the distance? 1,500. So the x distance will be, while y distance will be between points. Okay, so the points shall be like rectangular points. Understand? The points they should be corner of rectangle. Okay. Now next step is that when you make these points, okay, you need to make these points in points shape file. Okay, and export it as DXF. Okay, the next step will be, when you export this as a DXF, the next step will be that you will when you export this to the DXF, you need to open that in a CAD software. Like the famous, which you guys know, AutoCAD, or the open source which you may not know, LibreCAD. Okay, so LibreCAD is like 2D AutoCAD. Okay, but it is free. So if those guys who don't have AutoCAD, they can use that one. So you open that in a CAD software and make sure that your units are in meters. Okay, your units are in meters. Make sure they are in meters, and import that DXF, and make boundaries. Okay, camps. Okay, kitchen. This should be the element which I should see. Kitchen. What else? Mosque, or what is that called for health? Huh? Medical center. Huh? Medical camp. Okay, and water, toiletries. Huh? Washrooms, playground, washrooms, playground. What else?
Swimming pool. If there is a person who is a refugee, so the first task for him is to survive for the life. So swimming is not part for survival. So kitchen मैंने कह दिया ना, kitchen, camp, okay, medical camp, washroom और ये water tank, हाँ, water tank और security वो जो when you enter, so there should be a security check, हाँ, हाँ, देखो अपनी अपीयरेंस को देखो और बातों को देखो. वाटर टैंक तो वो उसको जिम खाना कहते हैं, बल्कि जिम खाना भी उसको नहीं कहते, उसको बॉडी बिल्डिंग सेंटर कहते हैं या कुछ और कहते हैं, क्लब नहीं कहते. अच्छा, ये सारा वो किचन में आ गया ना, किचन, वाटर टैंक और ये जो सिक्योरिटी चेक इन जो होती है ना, सिक्योरिटी चेक पॉइंट, ओके, और सिक्योरिटी चेक पॉइंट के बाद जो आपको, हाँ, जो आपको जो शुरू में जब बंद आता है उसको जो रखा जाता है ना टेम्पररी, ठीक है, सिक्योरिटी, बस ये सिक्योरिटी चेक पॉइंट ये काफी. सो यू हैव टू मेक दिस प्लेसेस, ओके, इन द AutoCAD, एंड वंस यू मेक इट, you save it and import the, अच्छा ये फिर नेक्स्ट स्टेप पे लिखते हैं, सेव इट, बस सेव इट पे बात खत्म. और ECDXF में सेव करना है एज DXF, ओके. और अब नंबर 4 हो गया, 5, import it back to QGIS, okay, import it back to QGIS and save it as shape file, okay. Make sure all, okay, यहाँ पे बाद में यहीं पे लिख लेगा, make sure that all क्या, all data is in polygon, okay, ठीक है. You may need to add point layer for labeling, हाँ, ठीक है ना, शायद इसकी जरूरत हो पड़े, लेकिन शायद इसकी जरूरत ना भी पड़े, ठीक है, लेकिन वो आप देखें, मैंने मे का वर्ड इस्तेमाल किया तो उसको आप देखें, ठीक है. और अभी ये जो मैं ये रिकॉर्ड हो रहा है ये मैं अपलोड करूंगा. क्या नाम है तुम्हारा? हुज़ैफा नाम है. तो देखिए जरा अपने आप को ठीक करो. ये सारा रिकॉर्ड हो गया, इंशाल्लाह अपलोड होगा. अच्छी बात ये, एनीवेज. तो हाँ, अच्छा ये, या दिस इज द पॉइंट, हाउ टू मेक श्योर दैट यू हैव द exact distance for the point. So let me check the tool first. So here we have a tool. ये अच्छा वो आपने कह दिया नहीं, अप्रोक्सीमेट तो मैंने भी शुरू में करवाया था, लेकिन एक्चुअली देयर इज अ टूल. सो वेक्टर रिसर्च टूल, और रिसर्च टूल के बाद रेगुलर पॉइंट्स, ठीक है, रेगुलर पॉइंट्स. so this is a tool, vector research tools, regular points. तो ये 6 नंबर, you may use vector to research tools
तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो रेफ्यूजी कैंप है इसमें जान के लाले पड़े होते हैं कि क्या मैं सरवाइव कर जाऊंगा या नहीं। ठीक है, इसमें आप स्विमिंग पूल की, तो ये स्विमिंग पूल, हाउ कैन बी स्विमिंग पूल, हाउ कैन बी क्लब्स पॉसिबल, तो सोचे दिमाग का इस्तेमाल करें ना, तो ये चीज़ें नहीं होती। ये अल्लाह ना करे किसी को इस तरह बदहालत तक पहुंचने के लिए बड़े सख्त हालात होते हैं रेफ्यूजी कैंप में। ठीक है, तो प्ले ग्राउंड होता है, प्ले ग्राउंड होता है बच्चों के लिए। जी क्या? प्ले ग्राउंड होता है बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो हैं इनकी अलग दुनिया होती है। हाँ, ये बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे, इनकी अलग दुनिया होती है, इनका एक और वर्ल्ड होता है। ठीक है, और इनकी द बेस्ट थिंग अबाउट किड्स इज दैट दे फाइंड things of their joy, they find things to play with, no matter how harsh the environment is, huh? And no matter how hard ship maybe they are facing, थोड़ी देर पहले वो रोते हैं, उसके बाद फौरन जाके कुछ खेलने के लिए शुरू हो जाते हैं, they start enjoying it। तो इसमें इनमें शुक्र का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये चूंकि नेचर पे होते बच्चे ना, तो अल्लाह का शुक्र बहुत ज़्यादा, उसी वजह से ये खुश होते हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता जब शैतान का अमल दखल शुरू होता है तो शुक्र करना उनमें ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए फिर वो नाशुक्र हो जाते हैं, इसलिए फिर वो खफा रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये वो है, ये पॉइंट्स हैं, इसे अगर आप फॉलो करेंगे तो दिस विल क्रिएट फॉर यू दैट शेल्टर। ओके, ठीक है। तो आई वुड सेव दिस थिंग, दीज आर 6 पॉइंट्स। और point number 1, you need a shape file for Pakistan. I gave you PAK admin 3. Okay. After that, you need to pick 4 point in the region, which is matches your class number, object ID. You should make a rectangle. They should be apart 500 and 1000, and you save it। और सेव करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आप इसका DXF फाइल आपके पास बनेगा, और DXF फाइल को आप क्या करेंगे, DXF फाइल को आप फिर एक्सपोर्ट करेंगे AutoCAD में। AutoCAD में इसको बना लें, बनाने के बाद फिर यू पुट इट बैक। ओके, सो दैट्स इट। So I would go back here. I will give you a little bit help regarding this project. Okay. So first I need to, before you get started, you should create folder first. Okay. Now let me try to create folder right here, right from here. यहीं से मैं देखता हूँ कि क्या मैं बना सकता हूँ folder यहाँ से या नहीं। So okay, let's start from the home. Home में I would go to the desktop button. Where's desktop? In the desktop, I will go to GIS. GIS, I would go to your section UTP, section P. And in the section, I would go to the assignment. बल्कि असाइनमेंट तो सबके लिए, तो मैं यहीं बाहर ये राइट क्लिक करूँगा, न्यू डायरेक्टरी। ओके, एंड द नेम ऑफ दिस फोल्डर विल बी शेल्टर _HW, यानी शेल्टर होमवर्क। ओके, और शेल्टर होमवर्क को आप ओपन करो, एंड अगेन एज आई टोल्ड यू, यू नीड डाटा। ओके, so right click, new directory, inside this you will create data folder. Okay, so it has now a data folder. Now what else we will do, we will go to the park data, where you will get the park data. I told you how to get the park data, huh? So you go there and you go to park admin 3 and copy it all. Right click, and can I move that from here? अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि इसको मूव किया जाए।
So instead, what I would do is I will go from here. I will go to GIS folder. I will go to park data, and in the park data, I will go to this park admin 3 and copy all the content of that. Okay. So right click on this and go back to your shelter homework data and paste it. Okay. Now after that, let's create a project. So I will save a project file. First, I need a new project. Okay. And then I will save a new project file, and I will save this in the shelter folder. And the name of this will be shelter. And after that, I will shift to the project home. Okay. Instead of this, I will use this project home for my work. Now in the data, I will go to the boundaries and I will open the shape file, park admin 3 shape file. नजर आ रही है वाला आपको? ठीक है, इसको मैं उठाऊंगा और I will put it here. ये मेरे पास park admin 3 आ गया. अब now, for example, what is your class number? 196. So I will filter 196 out of it. How? Right click and then where you will go? Filter, and object ID 1 is equal to, I will make sure 196 इसमें मौजूद है नहीं, तो all करो, नीचे ले आए और ये है 196. तो इस पे आप क्लिक करें. Let's test this thing. Yes, it works. And press OK. So here we have one polygon. Okay. So we'll use this as our base map. Understand? So now we need a good unit. I haven't explained that in the instructions. Make sure your units are such that it can be worked for distances. Okay. So Google Marketer is the one. 3256 क्या नाम है उसका? Google, हाँ नहीं, 34S तो एक खास जगह के लिए था ना. Google Marketer का क्या है? थ्री टू फाइव सिक्स है. क्या है? EPSG of Google three two five seven. So it is 3257. 3857. Okay. It is 3857. Okay, so we'll use this one, 3857. So what I will do, I will right click, export this, save feature as. Okay, now I want to go easy way ESRA shape file, or I would call this in GIS, and in the GIS I will go to shelter homework data, or data में I will give it a name, for example base map. Okay, और make sure कि जो मेरा CRS क्या हो, 3857 मैंने कहा. 3857 तो ये गूगल का है. अच्छा, गूगल का अगर आपको पता होना, 3857. So this is the WGS pseudo marketer. Press OK. Now it is 3857. Path is fixed. Press OK.
So we have only base map, okay, and we don't need this one, so I can remove this one. So right click, remove. Okay. Now let's change the, and let's check it, the CRS. The CRS of this is 3857. So let's change the project CRS from here and make it 3857. And now what we will do, we'll add 4 points. Okay, so let's check by our measure tool first, that how much that 4 points will be. I am giving you whole area, wherever you want in this area. Imagine that this area is free of population, no population here. So let's have a measure tool, and let's check whether we have our place or not in this region. So quite a we do have place, and it will take approximately how much? It will be a very small portion inside. See, it will take up to this much place. Okay, so let's have a start in this region. इसी रीजन के अंदर हम शुरू करते हैं, इसी रीजन के अंदर हम बनाते हैं. So how we can do it? We need to add a layer for points. Okay, so layer, create layer, shape file, or name it shelter location. Shelter location. Okay, shelter coordinates. Shelter coordinates. Type of geometry, this is important to specify. It should be, you can have point or multi-point. So we have multi-point, so let it be multi-points. Okay, and EPSG should be, as I told you, it should be 38. And I think we don't need any, for the time being, we don't need any field. We can have a field name, but we don't need at the moment, so we'll keep it like this. Press OK, and let's go to, which tool is this thing? Edit tool, and edit tool, and after edit tool, let's add some point somewhere. Okay, सो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऐड किया, बल्कि यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट ही ऐड ही ना करें, फिलहाल आप कुछ भी ना करें. गो टू वेक्टर और वेक्टर रिसर्च, ये क्या लिखा हुआ है? Input extent. So it may ask you some extent first. Okay, so now this is a tough thing to do. Okay, so the extent should be such a way. So let's before giving the extent, let's make some points. Okay, let's make some point before giving extent. I am already in the edit. Now add points. तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, इसको मैं ऑब्जेक्ट ID 1 देता हूँ. ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा अगर मैं इस टूल को यूज़ करूँ? तो दूसरा पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली, एज पर माई स्क्रीन, इट शुड बी समवेयर ओवर हियर. ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को कोशिश करूँगा कि नोट करूँ, और मैं दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा. ठीक है, सो ये देखें, ये टूल आप यूज़ करें, और दूसरा पॉइंट वाज समवेयर ओवर हियर. यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 हो गया, और ये ऊपर एक आप दे दें यहाँ पे, ये आपके पास यहाँ पे 3 हो गया. ठीक है, तो एक रफ एस्टिमेट से, और मेजर, you can make use of measure tool
और एक रफ एस्टिमेट का इस्तेमाल करते हुए आप कुछ पॉइंट्स पहले से पिक, यू शुड पिक पॉइंट बिफोर. ओके, नाउ आफ्टर दैट सेव दिस वर्क एंड टॉगल एडिटिंग आप बेशक ऑफ कर सकते हो. और अब आप क्या करो, अब आप जाओ वेक्टर रिसर्च टूल, और रिसर्च टूल के बाद रेगुलर पॉइंट्स, इनपुट एक्सटेंट. इनपुट एक्सटेंट अब मैं दे सकता हूँ, मुझे पता है कि अब एक्सटेंट तकरीबन कहाँ तक है. सो आई कैन गो फ्रॉम हेयर और ड्रॉ ऑन कैनवस. ड्रॉ ऑन कैनवस पे मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा ये जो चार जो है ये आपस में क्या हो जाए, इतना रीजन कवर हो जाए. ये मैंने दे दिया. नाउ स्पेसिंग between the points, so the spacing between the points, let me make a spacing 500, क्योंकि मेरी मिनिमम डिस्टेंस कितनी है 500 है ना, तो 500 की मैं स्पेसिंग दे रहा हूं. और लेयर टाइप क्या होगा 3857, ये टेम्परेरी की बजाय ये मैं सेव टू फाइल करूंगा. और I'll go to shelter data, or in data I will make another one, shelter coordinates. Okay, 01. इसको आप रन करें, क्लोज करें. सो यू हैव दिस पॉइंट्स, नजर आ रहे हैं आपको ये पॉइंट्स, ठीक है. तो जो रीजन मैंने बताया था उस रीजन के अंदर ये पॉइंट्स आ गए. तो इसमें अब हम देखते हैं कि नाउ लेट्स व्हाट आई सी हियर, बिफोर डूइंग एनीथिंग आई कैन सी कि द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर विल बी 1000 एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर विल बी 500, राइट. तो इसको मैं जाके एडिट करता हूं. जब अभी जाके कंफर्म भी करते हैं, स्नैप टूल को ऑन करो, प्रोजेक्ट, पहले तो प्रोजेक्ट को सेव करें और मेक द स्नैप टूल ऑन. वेयर इज स्नैप टूल, स्नैपिंग ऑप्शन, ये स्नैपिंग ऑन हो गया और ये एक्टिव लेयर, ठीक है. टोपोलॉजिकल एडिटिंग, अवॉइड ओवरलैप. ओके, सो एडवांस कन्फिग्रेशन में चले जाएं. एडवांस में आप मेक श्योर कि ये वाला लेयर हो, ठीक है. और अवॉइड ओवरलैप ऑलरेडी आपने किया हुआ है, ठीक है. ये आप अब आप क्लोज करें इसको बेशक. और अब मैं देखें अभी स्नैप हो रहा है, हाँ स्नैप हो रहा है ना. अच्छा, अब जाके मैं मेजर टूल से लाइन मेजर करता हूं. अब देखो छोटे छोटे स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है. मैं यहाँ से जाके यहाँ तक देखता हूँ तो बिल ये कितना आ रहा है ये. अच्छा, एलिप्सॉइड है, एलिप्सॉइड में आपको नहीं देगा. ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये कार्टिसन कोऑर्डिनेट है. कौन सी कोऑर्डिनेट है, कार्टिसन. तो गो टू द कार्टिसन वन एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड एग्जैक्ट 1000 मीटर है, ठीक है. एक डिस्टेंस ये हो गया और ये दूसरा डिस्टेंस कितना है, ये दूसरे ऊपर वैल्यू आ रही है ना, ये दूसरा आपके पास 500 है, ठीक है. तो ये 500 हो गया. और अगर मैं यहाँ से जाके ये 1000, ठीक है. ओके, तो ये हमारे पास डिस्टेंस बिल्कुल ठीक है. अब जाके इसको एडिट करते हैं, राइट क्लिक और टॉगल एडिटिंग. टॉगल एडिटिंग में इसमें से हम कुछ वर्टेक्स टूल सेलेक्ट करो और वर्टेक्स टूल के जरिए कुछ पॉइंट्स जो कि एक्स्ट्रा हो उनको आप क्या करो, उनको आप खत्म करें. फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, पिक हो गया, देखें यहाँ पे नीचे आ गया. राइट क्लिक मैंने किया है तो राइट क्लिक से ये पिक हो जाता है. तो इसको आप डिलीट प्रेस करें, खत्म हो गया, ठीक है. तो ये तो कुछ और दो पॉइंट सेलेक्ट हुए थे, ये अनडू करते हैं. एक मिनट, अब करते हैं. अब ये सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक और डिलीट प्रेस, तो अभी ये ख़त्म हो गया. ये एक्चुअली ये बियॉन्ड बाउंड्री है ना, जो एरिया था वो ज़रा बड़ा था. अब ये दूसरे वाले को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें इस पर और इसको क्या करो, ख़त्म करो. अगर आप ये मिडिल पॉइंट भी ख़त्म करना चाहते तो ये भी ख़त्म कर सकते हैं. राइट क्लिक करें, इस दूसरे पे भी राइट क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करके दोनों पे राइट क्लिक करें,
ये चलें एक को अभी फ़िलहाल ख़त्म करते हैं। इसको आप सेलेक्ट करें, डिलीट, इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक और सेलेक्ट यहाँ से करें और डिलीट प्रेस करें। तो वी हैव नाउ दिस 4 पॉइंट्स। अच्छा, अब इसको सेव करो। सेव करने के बाद रिमूव दिस वन, वी डोंट नीड दिस वन। ये शायद किसी गलत जगह पे भी मेरे ख्याल में सेव हुआ है ये वाला। आई डोंट नो वेयर दिस इज सेव, बट इसको आप रिमूव करो। अब आपके पास सही करेक्ट आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। टॉगल एडिटिंग ख़त्म करें। अब इसको आपने एक्सपोर्ट करना है DXF में। राइट क्लिक, एक्सपोर्ट, सेव फीचर एज, और यहाँ पे टाइप होगी क्या, DXF, AutoCAD DXF। फाइल नेम आपके पास गो टू सेम फोल्डर, डेस्कटॉप, GIS में कहाँ पे आप जाएंगे, शेल्टर, होमवर्क, डाटा में आप इसको आप दे दें शेल्टर कोऑर्डिनेट 1 ही आप दे दें, और ये ख़त्म कर दें। ये खुद ब खुद DXF लेगा। शेल्टर अंडरस्कोर कोऑर्डिनेट अंडरस्कोर 1, ये आपने ओके कर दिया। ओके करने के बाद मेक श्योर ये सूडो मर्कटर हो, ठीक है। और इसको फिर आप क्या करो, इसको आप ओके करो। Where it will go? It will go to the DXF. और वो DXF यहाँ उठा के आप ऐड भी कर सकते हो। यहाँ में उठा के मैंने उसको ऐड भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे उसको उठा के ऐड करने की कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके इसको रिमूव कर लेता हूँ। सिर्फ आपको बताएं कि आप ऐड भी कर सकते हो। अच्छा, अब होता क्या है, होता यह है कि you will be given coordinates, and coordinates are measured in GPS. GPS works on WGS 84. So you will be given 4 coordinates. तो आपको पता है 4 coordinates किस तरह पिक करना है, पहले से कोऑर्डिनेट पता होंगी सिर्फ। तो उस केस में आपने क्या करना, उस केस में इस तरह कुछ करना है। ये देखें, यहाँ पे आप जाएंगे एडिट में, एडिट में आपके पास ये क्या लिखा होगा, 4 पॉइंट्स आप ऐड कर देंगे, और 4 पॉइंट को ऐड करने के बाद वर्टेक्स टूल के जरिए, ये जो वर्टेक्स टूल है इसको आप प्रेस करें, और वर्टेक्स टूल के जरिए उन 4 कोऑर्डिनेट्स को आप क्या करो, उन 4 कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन आप सेट करें, एंड दे विल बी एज पर लोकेशन विच इज गिवन टू यू फ्रॉम द GPS। मेक श्योर कि आपका यूनिट GPS के लिए क्या हो, GPS वाला यूनिट हो। तो GPS वाला यूनिट क्या होता है, GPS वाला यूनिट होता है WGS 84। तो आप वो 4 पॉइंट WGS 84 में पिक कर लेंगे, राइट, ठीक है। When you pick the 4 points in WGS 84, और दा खबर बंदी का दलदरा शमा के तकिन ताता एमा शाता सिन वाला का पास का ना ताता एम पास खरा शमा के तकिन। तो ये जो 4 पॉइंट जो है, 4 पॉइंट्स जब आप पिक करते हैं तो 4 पॉइंट्स दे विल बी गिवन इन WGS 84। ओके, सो यू विल पिक 4 पॉइंट्स इन द पॉइंट लेयर, और वर्टेक्स टूल से यू विल मेक श्योर उसका CRS क्या हो, उस लेयर का CRS WGS 84 हो। वर्टेक्स एडिट टूल के जरिए यू विल चेंज इट्स कोऑर्डिनेट टू व्हाट, you will change its coordinate to the one which is given to you. Okay, understand? ठीक है ना, आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और उस लेयर को सेव एज करेंगे। यू विल सेव एज दैट लेयर, एंड यू विल मेक श्योर कि उस लेयर का जो CRS होगा वो क्या होगा, वो गूगल मर्कटर होगा। Why? Because the unit of Google Mercator is what? The unit of Google Mercator is meter. Okay, so we need to work in meter. Okay, फिर उसके बाद उसको also you will
say after that, so when it convert to meter, measure the distance between those points. What are the distances? So that you must have a know-how. Okay, what are the distances between those points? Those points will not be at 1,500. They may be in some other distance. Okay, understand? So measure the distance in that, and after measuring distance in that, what you should do, you should export that as DXF. Okay, and then you will be at this step at which we are right now. Okay, understand? So now what is the next step to do? The next step is to open CAD. I don't have CAD. So AutoCAD, I do have CAD, but I don't have AutoCAD. So I will open the another software. What is the name of this? LibreCAD. I will open this software. Why? It's free. It doesn't cost you anything. So I use this one. So and then I'll go for file. I'll make sure unit R. Current drawing preference. Current drawing preference unit. Unit should be meter. I make sure that thing. Or after that, what I'm going to do, file, open, and then open. What to open now? Go to desktop, go to shelter homework, data. Now it is asking for DW. I need DXF. So here we have DXF file, open it. Okay. So it will be opened, and now you need zoom all. Okay. So zoom all is which button? Auto zoom. So although it is added, लेकिन यहाँ पे कुछ उसका कंटेंट मेरे ख्याल में नहीं आ रहा. अच्छा, ये तो जूम पैनिंग है, ऑटो जूम है. Let's verify whether we have data inside that or not. Okay. So maybe application preference, default unit are in meters. यहाँ तक तो बात क्लियर है. नहीं, देखते हैं शायद उसमें डाटा या होगा नहीं होगा, देखते हैं अभी ना. तो ये तो 10 KB का पड़ा हुआ है डाटा. यहां से ओपन करते हैं. यहाँ लेयर, ऐड लेयर, और ऐड वेक्टर लेयर, और ऐड वेक्टर लेयर के बाद ब्राउज में जाते हैं DXF, इसको ओपन करते हैं, ऐड, तो इसमें एक एंट्री मौजूद है 8 पॉइंट्स का, ऐड, क्लोज. तो इट डज शो कि हमारे पास कुछ है. तो अच्छा, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो पॉइंट की जो थिकनेस है, शायद द थिकनेस ऑफ द पॉइंट इज सो मच स्मॉल सो दैट वी, और कलर ऑफ द वर्कबुक, और साइज ऑफ द डाटा विच वी हैव, ये भी एक एलिमेंट हो सकता है. तो दोबारा तो सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन unnamed document. अच्छा ये okay. Now here if you go at sidebar, ये आपको शायद नजर नहीं. I haven't used, by the way, this software that much. That one of reason is that if you go to the sidebar, you have one unnamed and the other is shelter. Okay, so ये unnamed जो है, मेरे ख्याल में इसको हमने क्लोज करना, और हमने इस शेल्टर ही को देखना है. ठीक है, ये जो जिस पे शेल्टर ये लिखा हुआ है. अब इसमें जाके जूम करते हैं.
I can't see anywhere points. दोबारा चलिए ट्राई करते हैं, फाइल, इसको इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, इंपोर्ट में ब्लॉक इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट में पीडीएफ है। व्हाट्स इन द ब्लॉक इंपोर्ट? अच्छा, वो ऑप्शन नहीं है। लेट्स गिव अनदर ट्राई। फाइल ओपन, और ओपन, अच्छा ये मैंने जो ओपन किया था ये मैंने क्यू कैड 1.x से किया था। हाँ, अब मैं दोबारा ओपन करूंगा और बजाय क्यू कैड 1.x की जगह मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँ, क्योंकि पहले पे ओपन नहीं हुआ। मैं यहाँ पे ड्राइंग एक्सचेंज सेलेक्ट करूंगा, और ड्राइंग एक्सचेंज को सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट करके मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद जूम, अब आ गए हैं पॉइंट्स। ये एक पॉइंट तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन आई डोंट नो बाकी क्यों नहीं आ रहे, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ तो डाटा आपके पास आ गया ना। तो अच्छा, ये एक ये है। अगर मैं फर्दर जूम आउट करूं, बाय द वे एक पॉइंट तो आ गया, ठीक है। मे बी तरीका तकरीबन यही है, ठीक है। फिर आप इसको क्या कर लेंगे, यू विल ब्रिंग दैट इन द कैड सॉफ्टवेयर, एंड व्हेन यू ब्रिंग दैट इन द कैड सॉफ्टवेयर, देन व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉ योर लाइंस। फॉर एग्जांपल अभी मैं कुछ लाइन ड्रॉ करता हूँ, 2 पॉइंट्स मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस वक्त स्नैपिंग ऑप्शन है। यू विल ड्रॉ योर लाइंस, ओके, ठीक है, बाय यूजिंग द लाइन टूल्स। आई विल टर्न ऑफ द snapping option. Now I will turn on again, और फिर दोबारा ऑफ करते हैं। तो मेरे पास ये एक बाउंड्री बन गई है, एंड यू गाइस नो हाउ टू go further. Okay, you will divide this area for the designation I told you, for the camps, for the other places which I have told you. Okay, तो वो करके ये आप इसमें ले आए, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ओके, ठीक है। When you are done, फिर आपके पास सेव हो जाएगा। उसको दोबारा फिर आप क्या करेंगे, you will re-import that back in the QGIS software. Okay, so let me try this one। ये जो भी मैंने बनाया इसको मैं ट्राई करता हूँ। ये मैं जाके फाइल, अच्छा ये डिस्टेंस मैं इसमें अगर मेजर करूँ, हाउ कैन आई मेजर डिस्टेंस? हेयर वी हैव डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट, और तो ये तो बहुत बड़ा डिस्टेंस इस वक्त शो कर रहा है। कितना? 77 समथिंग, हाँ, या लेट्स जूम टू दिस पॉइंट, मे बी लेट्स जूम टू दिस पॉइंट। ये जो एक पॉइंट हम गए हैं ना, इसको फर्दर जूम करते हैं। ये है जूम विंडो ना, हाँ ये देखें ना,
ठीक है। सो वो इतना ज्यादा छोटा था, जूम था कि वो एक ये एक स्टूडेंट जो है उसने कुछ भी नहीं सीखा। एक होता है इमोशंस, एक होता है इंटेलिजेंस। ठीक है। तो जिनके पास सिर्फ इमोशंस हैं उन्होंने सिर्फ इमोशंस सीखे, और जिनके पास इंटेलिजेंस था उन्होंने जाके से कुछ इंटेलिजेंट या कुछ इंटेलेक्चुअल, तो जिन्होंने हाँ सीखा है वो बेचारे सिर्फ हाँ, ये मैं आज की क्लास ली थी, यही चीज मैंने पिक की है। हाँ क्या ओके, ये पॉइंट्स हमारे पास अभी नजर आ रहे हैं ना। सो लेट्स मेक यूज ऑफ दीज पॉइंट्स। ओके, और मैं भी क्या करता हूं, मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करूंगा। ये डिलीट हो गया, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, ये सारे डिलीट हो गए। अच्छा, अब यहां पे जूम करेंगे, ये जूम विंडो, और यहां पे आके ये जूम हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके वो 4 पॉइंट्स हैं। और ये मुझे पता चला जब मैंने वो डिस्टेंस मेजर किए तो बहुत बड़ा 7700 पता नहीं किलोमीटर में आ रहा था। तो अब ये वो 4 पॉइंट्स एग्जैक्ट अपनी वो उस पे है। तो अब जाके इसके अंदर हम जाके क्या करेंगे, 2 पॉइंट, बल्कि रेक्टेंगल कर लेते हैं, क्या ख्याल है? नहीं, मेरे ख्याल में 2 पॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए ना। तो ये 2 पॉइंट करके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक पॉइंट पिक कर दिया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, और ये वापस यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गए। इसके अंदर फिर आपको पता है कि कैड के अंदर किस तरह फिर करते हैं, हाँ, हाउ टू ड्रॉ स्टफ। हाँ, गेट्स होने चाहिए, गेट्स। ओके, यहाँ वाला आप समझ गए हो। हाँ, और thumbs तक। अच्छा, ये अरे चश्मों वाले की चल दी, ये आप सेव बटन प्रेस करें, और सेव बटन के बाद नाउ इट इज सेव, इट इज सेव। ये डेटा आपने इसी ओरिजिनल फाइल के अंदर सेव कर दिया। अच्छा, इसको आप क्या करें, बेटर ये होता है कि कभी भी ओरिजिनल फाइल में ना सेव करें। फिर मैंने कर लिया, आप सेव एज किया करें। यह भी मैंने कर लिया। इसको मैं क्या करता हूँ, हाँ अच्छा, अब वेरी गुड पॉइंट, डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, नीचे देखें बिल्कुल एग्जैक्ट 1000, राइट। सो और ये दूसरा भी चेक कर लेते हैं, मेजर टूल। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट 500, राइट। सो ये हमने सेव कर लिया। ये क्रॉस कर लेता हूं मैं, और अब मैं यहाँ पे ये इसको रिमूव कर लेता हूँ, ये रिमूव लेयर। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे दोबारा ऐड करता हूँ। तो कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे यहीं पे कहीं पे पड़ा होगा, ये है DXF ना। इसको जरा ओपन करते हैं, तो देखिए इसके अंदर एक पॉइंट का डेटा है और एक लाइन का। तो ये लाइन उठा लो और ब्रिंग दिस हेयर, तो यहाँ पे ये लाइन आपके पास ही आ गया। ओके, तो मे बी यू गेट लाइन डेटा, मे बी यू गेट लाइन डेटा, राइट। फिर उस लाइन को आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पॉलीगॉन खुद बनाओगे उस लाइन की टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हुए। इज दैट क्लियर? लेबल वायर तो आपके पास जबरदस्त किस्म का एक शेल्टर मैप आ जाएगा। रिगार्डिंग शेल्टर, there are 3 phases, one is temporary, the second is a little bit longer term, okay, ठीक है। So and the third is for a very 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 long time, okay. So there are 3 types. So what is experience, what the experience of UN says? The experience of UN says that first of all you should avoid shelters. Avoid shelters.
Number one. Number two, if you want to keep it for short term, as short term as possible. Why? Because the people living there, they will suffer. Imagine a kid who is born in shelter. Okay? Now, if you keep that for a long term, what will happen? The future of that kid is ruined. I'm telling you. He may have no future. And why? Because maybe there is another kid who is enjoying good school, good college, good university, and the second kid, he may be struggling for food. जाती है नहीं है तो इसमें हाँ तो ये पॉइंट है इसमें फिर आप देखें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या किया था जब वो गए थे मदीना तो शेल्टर नहीं बनाया क्या किया अखुवत भाईचारा भाई भाई बनाया तो ये रिकमेंडेड है आई बात समझ में अब देखें हर चीज में एक हिकमत है एनीवेज लेट्स कम बैक हियर और दिस इज हाउ यू विल डू द असाइनमेंट ये मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बना लिया ठीक है आपकी सारे सेक्शन पी बैच 20 this is the civil department UT Peshawar. So, अच्छा control